हेलो। हेलो श्वेता, बाकी मतलब किसी का क्लास चल रहा है क्या अभी? हेलो। हेलो। नो सर, क्लास नहीं चल रहा है। तो बाकी कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, क्या बात है? बोलते हैं सर। এবার থেকে করোনা जमाने की सगाई में तुमने कहा था कि वो बाहर वाली है। हमारे घर के मामले में बोलने का उसे कोई हक नहीं है। हमने गुस्से में भी थी और गलत भी थी। अनुपमा को अपनी बहू चुनने का पूरा अधिकार है और ये मत भूलो कि वो बहू नहीं अब बेटी है। हमेशा रहेगी। बस आंखों की तरह वो जल्दी से स्क्रीन शो कर रहे हैं सबको? यस सर। टुडेज टॉपिक इज वेब एनालाइजर। एक्चुअली वेब एनालाइजर क्या होता है, मतलब इंडस्ट्री में यूज़ होता है, क्योंकि जो इंडस्ट्री में साउंड व वाइब्रेशन जो सब जनरेट होता है उसको मेजर करने के लिए वेब एनालाइजर यूज़ होता है। तो इन जनरल वेब एनालाइजर में क्या है, एक इनपुट सिग्नल जो है इनपुट एटेन्यूएटर के थ्रू डाइवर एम्पलीफायर में जाएगा, उसके बाद क्यू फिल्टर, हाई क्यू फिल्टर से पास करेगा। और दिस इज द डायग्राम ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, मीन्स 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। means this filter or this is the block diagram of audio frequency wave analyzer. And the wave analyzer consists of very narrow passband filter section which can be tuned to particular frequency within the audible range, which range is started from 20 Hz to 20 kilohertz. And the block diagram of wave analyzer is shown this figure. इनपुट जो सिग्नल है ड्राइवर एम्पलीफायर से जो हाई
क्यू क्वालिटी पास एक फिल्टर के थ्रू पास होगा, उसके बाद मीटर रेंज ऑफ एटेन्यूएटर में जाएगा और उसके बाद आउटपुट एम्पलीफायर में आएगा। आउटपुट एम्पलीफायर से दो जाएगा, एक आउटपुट बफर में फॉर ऑक्सिलरी यूज़ के लिए और सेकेंडरी डिवाइस के लिए, और दूसरा होगा मेरा मीटर में एंड डिटेक्टर, जहाँ पर हमको जो मेज़र करना है वो जो रिजल्ट को देखना है उस ये जाएगा। तो फिल्टर का तो ये पता ही है सबको, जो लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, हाँ, और ये हाई क्यू फिल्टर एंड C and R varies for frequency control and C is varies for frequency modulation। R ये जो एरो है इसका मतलब है ये वेरिएबल है। R is varied for frequency control and C is varies for frequency modulation. So here the complex wave to be analyzed to pass through the adjustable attenuator. The complex wave to be analyzed is passed through an adjustable attenuator which serve as a range of multiplier and permits a large signal to amplitude and to be analyzed without any loading the amplifier. Now the output of the attenuator is then fed into selective amplifier which amplify the selective frequency, and the Dirac amplifier applies the attenuated signal to input signal to a high Q active filter. High Q active filter, this high Q filter is low pass filter which allow the frequency which selected to pass and reject all the others frequency. Only pass the low frequency, and the magnitude of this selected frequency is indicated by a meter, and the filter section identifies the frequency of the component, and filter circuit consists of a cascade RC resonance circuit and amplifier. For selective frequency range, the capacitors generally used are closed tolerance prototype, a polystyrenes type, and resistance are used are precision of potentiometer, and capacitor are used to range of changing, and potentiometer is used to change the frequency with selected band pass band. Hence this wave analyzer is also called frequency selective voltmeter, because here we select the frequency by variable of potentiometer or the resistance. So can input, we can select the frequency level, and here the entire audio frequency range is covered is decayed step by switching the capacitor of RC section. RC section can be covered the AF range, means audio frequency range, and the selected signal output from the final amplifier stage is applied to the meter circuit, and the selected signal output from the final amplifier stage is applied to the meter circuit and to be untuned buffer amplifier, and the main function of this buffer amplifier is to drive the output devices such the recorder or electronics counter, means this part is that we directly see the result, but for further application or further process we can record by using output buffer amplifier for secondary device, for recording device or counter. And the meter has several voltage range as well as decibel scale mark on this, and it is driven by
an average reading of rectifier type detector, and the wave analyzer must have extremely low input distortion and undetectable by the analyzer itself, and the bandwidth of the instrument is very narrow and typically about 1% of the selective band given by the following response of characteristics shown in figure. तो यहाँ पर दो एक स्केल जो मीटर में रहेगा, दो टाइप का स्केल रहेगा, एक होगा डेसिबल स्केल और एक रहेगा वोल्टेज स्केल। एक गया मेरा एक सिंपल सा ग्राफ। ये जो सब्जेक्ट, ये जो पैटर्न है, इसमें कोई मैथमेटिकल ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरी बेस्ड है। इसमें मेरे को लगता है तुम लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बाद में जब जो मैथमेटिकल बेस्ड है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होगा। तो ये गया मेरा एफ, जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज जो ऑसिलेटर है इसका है। डायग्राम को ड्रॉ करना है और जस्ट इसको एक्सप्लेन करना है, और ये मटेरियल हम आज अपलोड कर देंगे। दूसरा है, और इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, साउंड मेजरमेंट, वाइब्रेशन मेजरमेंट। तो वाइब्रेशन कहाँ होता है? इन इंडस्ट्री में, there are heavy machineries which produce a lots of sound and vibration, and it is very important to determine the amount of sound and vibration, because if it exceeds the permissible level, it will be create a number of problem. So we can use the wave analyzer, we can just identify the or determine the amount of sound or vibration, but we cannot solve the problem, means cannot reduce the vibration or sound by using wave analyzer. This instrument used only for detection of vibration or sound, and after detecting the vibration or sound, we can send to the further circuitry for further process to reduce the level of vibration and sound. Clear? Now, heterodyne wave analyzer, यहाँ पर एक चेंज है जो है, जो इनपुट सिग्नल और एक लोकल ऑसिलेटर भी कनेक्टेड रहेगा, लोकल ऑसिलेटर भी कनेक्टेड रहेगा, और IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर भी कनेक्टेड है। यहाँ पर देखो इनपुट जो 0 to 18 हर्ट्ज है, एंटीट्यूड एम्पलीफायर तो फास्ट फिल्टर में जा रहा है, एज सेम फ्रीक्वेंसी रेंज एंड फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग बाय द लोकल ऑसिलेटर भी फास्ट फिल्टर में जा रहा है, वहां से मेरा IF में जा रहा है। IF का फंक्शन क्या है? राइज द सिग्नल लेवल। देन सेकेंड फिल्टर में जाता है, सेकेंड फिल्टर में भी अनदर ऑसिलेटर है, और उसके बाद एक्टिव फिल्टर सेक्शन मीटर में जा रहा है, डिटेक्टर में, एंड आउटपुट मीटर कैलिब्रेटेड इन दिस। तो ये wave analyzer, a heterodyne wave analyzer, in this fact the instrument designed to measure the relative amplitude of the signal frequency component in complex waveform. A wave analyzer, in this fact the instrument designed to measure the relative amplitude of the signal frequency component in a complex waveform. Basically the instrument acts as a frequency selective voltmeter, which is used to the frequency on signal while rejecting all other signal component. Only it selected the frequency component or frequency signal, except frequency signal, with it is rejected all the any other component signal, and the desired frequency is selected by a frequency calibrated dial to point out the maximum amplitude. The desired frequency is selected by a to the point of maximum, and the amplitude is indicated either by suitable voltmeter or CRO. This amplitude is indicated either by a suitable voltmeter or using CRO, and this in large range. Previously F is audio frequency range, and this is it megahertz range, and the input signal to be analyzed is heterodyne to higher IF by an internal local oscillator,
and the tuning of the local oscillator shift the various signal frequency component into the pass band of the IF amplifier, and the output of the IF amplifier is rectified and applied to the metering circuit. The output of the IF amplifier is rectified and applied to the metering circuit, and the instrument using heterodyning principle is called heterodyning tuned voltmeter. तो ये जो हेटेरोडाइन वेव एनालाइजर है ये क्या है मेरा, इसका जो रेंज है ये है मेरा मेगाहर्ट्ज रेंज में. दूसरा बात है इट इज मेजर द रिलेटिव एम्पलीट्यूड एंड इट यूज्ड अनदर लोकल ऑसिलेटर टू शिफ्ट द various signal of frequency component into pass band of the intermediate frequency amplifier, and the output of this IF amplifier is rectified and it is applied to the metering circuit, and the instrument using heterodyning principle is called heterodyning tuned voltmeter. And this is the block diagram of हेटेरोडाइन. देखो ये मेरा एंटी है, ये लोकल ऑसिलेटर जो एक फिल्टर के पास बैंड फिल्टर के थ्रू पास किया जाए, उसका जो आउटपुट है आईएफ में जा रहा है, आईएफ के थोड़ा सेकेंड बेस में आ रहा है. उसके बाद क्या हो रहा है जो एक्टिव फिल्टर सेक्शन में अप्लाई हो रहा है, उसके बाद मीटरिंग जो डिटेक्टर और मीटरिंग एम्पलीफायर में जा रहा है, उसके बाद हमको आउटपुट मीटर आइदर इन वोल्ट और डेसिबल में मिल रहा है. क्योंकि मेरे को एम्पलीट्यूड ए करना है तो एम्पलीट्यूड रिलेटिव एम्पलीट्यूड एक गया मेरा हेटेरोडाइन. एंड अनदर इज दैट wave analyzer using this heterodyne principle is shown figure. The operating frequency range of this instrument is from 10 kilohertz to 18 megahertz, and total overlapping section is 18 band selection, and the bandwidth of the controlled by active filter and selected at 200, 1000 and 3000 hertz, and the application has the same purpose: electrical measurement, sound measurement and vibration measurement. Just change the frequency range, and amplitude, relative amplitude can be measured by using this instrument. And another is that harmonic distortion or total harmonic distortion, THD, is measured the harmonic distortion in present signal and defined as the ratio of the sum power of the all harmonic component to the power of fundamental frequency, and the distortion factor is closely related in terms, sometimes is used as the synonyms. In audio system, the lower distortion means that component in loudspeaker and amplifier or microphone and other equipment produce more accurate reproduction of an audio recording. With an input to understand in to understand a system with an input and output such as audio amplifier, we start an ideal system where the transfer function is linear and time invariant. When a signal passes through a non-ideal and non-linear device, the additional content is added at the harmonic of the original frequency, and THD is measurement of the extent of the distortion. When the main performance criteria is purity, and the original sine wave, the measurement is the most commonly defined as the ratio of RMS amplitude of the selective higher harmonic frequency to RMS amplitude of the first harmonic and fundamental frequency. And THD
is equals to the voltage range square by V1, where Vn is the RMS voltage of nth harmonics and n is the fundamental frequency. N is the fundamental frequency. Here V1 is root over V2 square plus V3 square plus V2 dot 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 up to n, and by V1, where n is the fundamental. Next is the spectrum analyzer. Spectrum analyzer, the spectrum analyzer and the modern spectrum analyzer used for narrow band super heterodyne receiver. Super heterodyne receiver, and super heterodyne is nothing but a mixing of frequency in super above the audio range. And the fundamental block diagram of super heterodyne spectrum analyzer or RF spectrum analyzer as shown in this figure. Here RF is the input attenuator and the low pass filter. Here is the mixture, and here is the IF amplifier. Here is the detector. Here the output CRO, and sweep generator, where the voltage tuned oscillator which connected to the mixer. Here one signal is connected from RF input and another is tuned oscillator produce another signal. Here mixing, then इंटरमीडिएट एम्पलीफाइंग और लो लेवल सिग्नल जो होगा उसके बाद डिटेक्ट होगा, उसके बाद सीआरओ में डिस्प्ले होगा. तो सीआरओ में भी दो सिग्नल जा रहा है, एक इधर से और एक इधर से. सो सुपर हेटेरोडाइन स्पेक्ट्रम एनालाइजर और आरएफ स्पेक्ट्रम एनालाइजर. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ आरएफ स्पेक्ट्रम एनालाइजर. So here what happened here, the RF input to be analyzed is applied to the input attenuator. After attenuating, the signal is fed to low pass filter, and low pass filter is suppresses the high frequency component and allow low frequency component to pass through it, and the output of the low pass filter is given to the mixer. And when the signal is fixed, the signal coming from the voltage control or voltage tuned oscillator, means this oscillator, the oscillator is tuned over 2 to 3 gigahertz range, and the output of the mixers include two signals whose amplitude are proportional to the input signal. So the output of the mixer include two signal, one from input the RF and another from tuned oscillator or voltage tuned oscillator or voltage control oscillator. So two signal is mixed and the output of the mixer include two signals whose amplitude are proportional to the input signal, but their frequency are the sum and difference of the input and the frequency of the local oscillator. The output of the mixer include two signal. The जो सिग्नल दो सिग्नल को कंसिस्ट करेगा, मतलब जो मिक्सर है उसका जो आउटपुट होगा वो दो सिग्नल का होगा, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल होगा इनपुट के साथ, बट देयर फ्रीक्वेंसी आर द सम एंड डिफरेंस ऑफ द इनपुट signal and frequency of the local oscillator. Okay. Now, since the frequency range of the oscillator is tuned over 2 to 3 gigahertz, the IF amplifier is tuned to a narrow band of frequency about 2 gigahertz. Therefore, only those signals which are separated from the oscillator frequency by 2 gigahertz are converted to intermediate frequency band. This IF signal is amplified by the IF amplifier, then rectified by the detector. After completing the amplification and rectification, the signal is applied to the vertical plate of the CRO to produce the vertical deflection of the on the. Thus, the sawtooth signal sweep the oscillator is linearly from the maximum frequency ranges 2 to 3 gigahertz, and the sawtooth signal is applied not only the oscillator but is also the horizontal plate of the CRO.
तो एक सॉटूथ एक मिक्सर में जा रहा है, दूसरा जा रहा है मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेट में ऑफ द सीआरओ और सीआरटी, और एक आ रहा है मेरा जो डिटेक्टेड और रेक्टिफाइड और एम्पलीफाइड जो इनपुट आरएफ सीक्वेंस से है. नाउ द after completing a rectification of the signal is applied the vertical plate of the CRO to produce the vertical deflection on the CRT screen. Okay. And another is that the sawtooth signal is applied on the CRO horizontal plate to get the frequency axis or the horizontal deflection on the CRT screen. On CRT skin, the vertical axis is calibrated in amplitude and horizontal axis is calibrated in frequency. So CRT, the vertical axis is calibrated in amplitude and horizontal axis is calibrated in frequency. In horizontal, the sawtooth signal is applied by the oscillator, and horizontal signal is applied the amplified and rectified signal for vertical. So vertical axis is the amplitude and this horizontal axis is frequency. Okay. Another part is the signal generator, standard signal generator. Signal generator are the RF oscillator, wideband amplifier, extended oscillator and modulation oscillator and output attenuator.